Hi kids, we are starting a new chapter number 21, letter writing from the book English Grammar 5. A letter is a substitute for conversation. In letter writing, messages are conveyed from one person to another and from one place to another. A letter may be used for applying for jobs, making inquiries, complaining, conveying news, greetings, etc. Broadly speaking, there are two types of letters. तो जो लेटर होते हैं वो सब्सटीट्यूट होते हैं कॉन्वर्जेशंस के लिए. ओके जो लेटर राइटिंग है उसमें हम मैसेजेस कन्वे करते हैं एक पर्सन से दूसरे तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. ओके देन जो लेटर होते हैं वो काफी सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे जॉब के लिए अप्लाई करना हो, इंक्वायरी करनी हो, या फिर कंप्लेन करनी हो, कोई न्यूज कन्वे करनी हो, कोई ग्रीटिंग्स हो. डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लेटर राइट कर सकते हैं. अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो टू टाइप्स के लेटर्स होते हैं. फर्स्ट, इनफॉर्मल लेटर्स, लेटर्स टू पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा, जो कि हम अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड उनको लिखते हैं, नोन वंस को लिखते हैं. ओके Second, formal letters, letters to business firms, the editors of newspapers, government officials and for invitations etc. ये हम business firms को, editors को, newspaper के, government officials को, then invitations के लिए and for many other different purposes के लिए हम लिखते हैं. इन्हें हम formal letters कहते हैं. Okay? Now we'll know about the format of an informal letter. The outlines given below show various parts of an informal letter and their proper arrangement. These are the outlines which show the arrangement of the informal letter or the outline. First, we need to write the writer's address. Now, here you can see we have written C51 Rohini, Delhi. Okay. Then second, we have to write the date, which is here is April 21, 20XX. Now, the date on which you are writing the letter, you need to put here. Okay. Then third, salutation, which is my dear father. Okay. Respected father, or my dear friend, your friend name. Okay, like this. Then fourth, body, in which you write the main message. Okay, on what topic you are writing the letter, you write that thing in the body. Okay. Then fifth, subscription, which is your affectionately, yours truly, yours obediently. Okay, your friend. So you need to write it here. Okay. And in the end, sixth, signature. In the end, we'll write the name, which is the signature. Okay. Note, date can be written as April 15, 20XX or 21st April 20XX or 21 April 20XX. These are the three ways in which we can write the date. Okay. Now we have the format of a formal letter. First, again, the writer's address. Here we have A11 Kurukshetra, Haryana. Okay. Then second, date. August 18, 20XX, the date on which you are writing the letter you need to mention here. Okay. Third, address of the person or firm receiving a letter. Now this is the different part you need to mention here. In the previous one, informal letter, you haven't write this, the person or the firm receiving the letter. You just mention this, writer's address. So here you need to mention, there is given the executive officer, Nagar Palika, Haryana. Got it? Then in the fourth one, salutation, which is dear sir / madam. Okay. Always prefer to write respected, not dear, because it looks like informal. Okay. Then we have fifth, subject. Here you need to write in one line or in around 3 to 4 words
on which you are writing the topic. It is based on inquiry about something and any other thing, complaining letter. Okay, any other thing you need to mention in the subject part. Okay, this is for the formal letter. Okay, then in the sixth part we have body. Here you need to write the message in detail, whatever you are talking about, that thing. Okay, then seventh, subscription. Yours faithfully, yours obediently, yours truly, whatever you can write. Okay, then eighth, signature, means your name. Okay, that's it. Then we have informal letters. Letter to a friend consoling her on her illness. हम फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं उसकी इलनेस में, उसको कंसोल करने के लिए. ओके, सांत्वना देने के लिए. 210 उत्तम नगर, दिस इज द. Then Dwarka, Delhi 2, this is whole, the writer's address. Then 18 July 20 dash, you need to write the date. Okay, then dear Ria, here is the salutation. Here you need to write the name of your friend. Okay, then I am grieved to learn about your illness since last 2 days. I am sure you must have shown some carelessness to the changing season and caught viral fever as doctor has said you. I hope you take good diet and medicine on time as suggested. I wish you recover soon. Take care. I will come to see you tomorrow. Now this part is called the body part. Here you have written the message, whatever you need to convey to your friend, which is Riya. Okay. So आपने लिखा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो आपकी इलनेस को सुन के, लास्ट 2 डेज से जो हो गई है, और आपको पता है कि आपकी फ्रेंड ने बहुत केयरलेसनेस की होगी, तभी उसे वायरल फीवर हो गया, और आप बोल रहे हो कि आप अच्छी डाइट लो, रेस्ट करो, जैसे डॉक्टर ने बोला वैसा करो और जल्दी रिकवर हो जाओ, और मैं तुम्हें कल मिलती हूँ. ओके, देन इन द एंड योर डियर फ्रेंड, subscription, then your name, or you can say signature. Okay, then we have formal letters. First, application for leave on brother's marriage. Application leave के लिए लिख रहे हैं हम, brother की marriage है इसलिए. Now 515 Rajouri Garden, Delhi 2. Again, this is the writer's address. Then you have to mention the date, 18 April 20 dash, or then this is the receiver's address, who is receiving the letter. The principal, DAV Public School, Raja Garden, Delhi. Okay. Then there is the salutation, dear sir. Okay. Then we have the subject. Subject, leave of absence on 16 March 20 dash. मतलब हमें लीव चाहिए तो हमने पहले ही उसके लिए लेटर लिखा है. Okay. Then I wish to inform you that my elder brother marriage will take place on the 20th of April. I will have to be present in the ceremony along with my family members. Therefore, I will be unable to attend school on that day. I will be thankful if you could grant me leave of absence for that day, that is 20th of April. So, यहाँ पर आपने वही कंटेंट लिखा है, वॉट एवर मैसेज यू नीड टू कन्वे टू योर स्कूल प्रिंसिपल. तो आपको छुट्टी चाहिए, आपके बड़े भाई की शादी है और आप उस सेरेमनी में प्रेजेंट होगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, इसलिए आप स्कूल नहीं आ पाओगे उस दिन, और आपको छुट्टी के लिए आप थैंकफुल कर रहे हो अपने प्रिंसिपल को कि ग्रांट कर देंगी तो, और आपने डेट मेंशन की है कि आप कब छुट्टी लोगे. ओके, देन थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट. Then yours sincerely, Arman Gulati, class 5th A. Then you have mentioned the subscription, your name and your class. Okay. Then second, application to the health officer complaining about the poor sanitation prevailing in your locality. अब आप हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन करते हुए जो भी पुअर सैनिटेशन है आपकी लोकेलिटी में, उनको लेटर लिख रहे हो. ओके.
Now 3/12 Subhash Nagar, Delhi. Again, this is the writer's address. Then 11th March 20XX, this is the date. Then the health officer, Municipal Corporation of Delhi, Delhi. This is the receiver's address. Then we have the subject, poor sanitation in our locality. Here you can also see the subject. So whatever is given in the question, you need to write it here. Okay. Then, sir, this is the salutation you have used. You can also write respected sir / madam. Okay. Then I wish to draw your attention to the extremely poor sanitation in street number 5, Raghuveer Nagar, Delhi. There are pits at every step in the street. These pits have become pools of dirty water. During this rainy season, the mosquitoes are breeding in these pits and spreading dengue and malaria. The sweepers have been neglecting their duty for days. Heaps of dust and rubbish lie scattered on the streets. The foul smell makes it impossible for anyone to walk through these lanes. Now, here you can see you have explained the scenario. Whatever you need to give the information, related information on which you are writing the letter, you are writing here. Okay. तो आपने लिखा है कि आप अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो कि आपके जगह पर मेंशन किया है आपने कि स्ट्रीट नंबर 5 रघुवीर नगर में बहुत ज्यादा पुअर सैनिटेशन है, पिट्स है, गड्ढे हो रखे हैं हर जगह पर, और जो पिट्स हैं वो पूल्स बन गए हैं गंदे पानी के, रेनी सीजन की वजह से मॉस्किटोज ब्रीड कर रहे हैं जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया फैल रहा है. स्वीपर्स अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते, नेग्लेक्ट करते रहते हैं. ऑल्सो काफी ज्यादा गंदगी हो चुकी है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है इधर उधर, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल हो रही है. कोई भी वॉक नहीं कर पाता ठीक से उन लेन्स में. ओके. देन it won't be a surprise if some epidemic breaks out. Please initiate measures in order to improve the sanitary conditions in this area as early as possible, hoping that you take prompt action in this regard. Then आपने और एक दो चीजें लिखी हैं थोड़ी सी कि एपिडेमिक अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि क्लेनलीनेस ही नहीं है. ऑल्सो अगर आप इनिशिएट करें कुछ मेजर्स तो आप को लिए हम बहुत ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे. दिस इज हाउ यू हैव रिटन द लेटर, द बॉडी ऑफ द लेटर. ओके. देन वी हैव योर्स ट्रूली विच इज द सब्सक्रिप्शन. देन योर नेम प्रमोद गुप्ता, और इफ यू आर राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर सोसाइटी you can write the name of your society or colony. Okay. Then we have creative skill, time to do, write letters and applications on the following topics. Now you need to write these topics by yourself. I'll just explain these topics. Okay. First, write an application to the SHO of the police station reporting the theft of your gold ornaments. आपको SHO को लिखनी है पुलिस स्टेशन के, क्योंकि आपके जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं वो चोरी हो चुके हैं, उसके लिए आपको लिखना है. सो दिस इज फॉर्मल लेटर. यू नीड टू फॉलो द आउटलाइंस ऑफ द formal letter here. First is writer's address, then you need to mention the date, then the receiver's address, then we have the salutation, then we have the subject, then you need you'll write the body of the letter. Okay. Then you'll mention the subscription and your name. Okay. Then second, write a letter to your friend describing how you spent your summer vacation. नाउ आपको अभी एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, डिस्क्राइब करते हुए कि आपने अपनी समर वेकेशंस कैसे स्पेंड की. दिस इज अ इनफॉर्मल लेटर. यू नीड टू फॉलो द आउटलाइंस ऑन इनफॉर्मल लेटर. ओके. देन थर्ड वी हैव राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन इन द हॉस्टल. अब अपने एल्डर ब्रदर को लेटर लिखना है कि एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रेप कर रहे हो उसके बारे में बताते हुए. अगेन दिस इज इनफॉर्मल लेटर. यू नीड टू फॉलो द आउटलाइंस ऑफ इनफॉर्मल लेटर. ओके. देन फोर्थ, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल सीकिंग 4 days ऑफ लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी. प्रिंसिपल को लिखनी है लीव के लिए 4 days की, क्योंकि आपकी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है, वो वाली चीज को स्टेट करते हुए. दिस इज अ formal letter, so you need to write accordingly. Okay.
So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.